And Varun Dhawan. Hello, this is Shantan from Field Gossip. Dave. Hello. What's up? Hi, how are you, buddy? From where? I am from Field Gossip. Field Gossip. We all know that Varun is a very funny person. So can you share some off-screen memories or off-screen moment with us? तो अभी कुछ ही दिन पहले हम पुणे गए टू प्रमोट द फिल्म और वेरी काइंडली द मॉल हैड सेंट अस अ 4-seater चार्टर. तो बहुत छोटी सी, इट वाज लाइक जैसी गाड़ी है विथ विंग्स, इट वाज दैट काइंड ऑफ अ फ्लाइट. सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक वी वर सिटिंग इन द कॉकपिट. यू कुड सी द पायलट, को पायलट, हम बैठे थे और हम रनवे पे थे. They were about to take off. Co-pilot and pilot are doing, you know, they're getting everything in order. और वरुण बैठा है यहाँ पे और पूछा है, सर फाइटर जेट्स इस वेदर पे फ्लाई कर सकते हैं ना? तो co-pilot is thinking मैं should I start flying or should I answer his question? He's like, sir, not in this weather. नहीं, but अगर if there's a war, then what happens? So I look at Varun, shut up, let him start flying. So that's Varun. He's always up to something. He doesn't think about कहाँ है, no filter. जो दिल में है वो बोल देता है, पूछ लेता है. But luckily we took off and we reached safely. And we have to thank that pilot, co-pilot, because Varun asked them so many questions. But after a while he did get back in for his seatbelt and sat like a good passenger. Hi Varun, hi Kiara. You're looking damn pretty as usual. Okay, so we have been watching you everywhere, like Pune, Ahmedabad, and now we are in Kolkata. How are you feeling in Kolkata? एकदम भालो, एकदम खुश है. But since I've been in Kolkata, since morning I've been asking for Mishti Doi and I've not been able to get it because we went to Flurys और Flurys पे वो रम केक खाया हम लोगों ने. But I'm still on the lookout for Mishti Doi. So by the time the day ends, or maybe after this, we have to get it. We have to get it. We'll surely get it. Okay, so can you tell me, Kiara, आपके साथ शूट के टाइम वक्त पर एक प्रैंक हुआ था, I guess, सूत्रों के मुताबिक. कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? Wow, सीना यहाँ से प्रैंक पे चले गए. But before I answer your question, thank you everyone for being here today. We've been wanting to come to Kolkata since we knew we were marketing the film, because obviously Kolkata is a very, very special place, and it's also the audience of our film. We feel this is the right audience for our film. We know what a warm city it is, a city of joy, and our film is a film on joy. So we had to come here to spread that joy. So thank you all for being here. Before I get into the pranks, I have to say that the film is full of surprises and full of masti, and you know, it's all on relationships, and it's a family entertainer. So naturally my family, my on-screen family, couldn't but help pull off a lot of surprises and pranks on all of us, and that's the camaraderie we just had on set. So yeah, I think Varun can tell you, because Varun is our masti-khor prankster. He's going to put it on YouTube, so we'll save it for our YouTube version. Thank you so much. Let's go, yes, to the press. Over to the press. Thank you. जी सर. जो ट्रेलर से जैसा प्रतीत हो रहा है, जैसा हम लोग महसूस कर रहे हैं कि ये शादी करें या ना करें, कि वरुण ने तो अभी हाल ही में शादी कर ली. हाल ही में शादी कर ली है, तो आपका क्या इरादा है और क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिहाजा से? सर मैंने अपने घर में ही, आई मीन माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने बहुत हैप्पी मैरिज देखी है अपने घर में. तो नेचुरली मेरे दिल में, और जब से मतलब forever I've always felt कि is this better? Yeah. I believe in the institution of marriage. तो personally मुझे लगता है कि शादी करनी चाहिए हर किसी के फेज में. You know, there is a next chapter in your life. It is a journey, but
More importantly, I think it's choosing the right life partner. Because मेरे अगर if I have to my heart I feel कि शादी करो तो एक ही बार करनी चाहिए. तो you definitely hope that you know you choose the person you want to grow old with, you want to spend the rest of your life with. तो कर लेनी चाहिए. और वरुण का क्या कहना है इस वो तो एग्जाम्पल है यहाँ पे कि तो अभी नई शादी हुई है. एक ही बार करना चाहिए और मैं कर चुका हूँ. तो बट दिस फिल्म आई थिंक मोर देन एनीथिंग इट्स अ फैमिली एंटरटेनर है. what मनोरंजन करने के लिए बनी हुई है. एंड सिचुएशन ऐसी है कि हमारी शादी वी हैविंग सम प्रॉब्लम्स आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड मैं वापस आता हूँ और मैं अपने पापा को बोलना चाहता हूँ कि पापा नहीं जम रहा है हमारा. बट बिफोर मैं बोल पाऊँ उसको पहले पापा मुझे बोल देते कि वो मम्मी को छोड़ना चाहते हैं. तो वहाँ से कॉमेडी शुरू होती है, सिचुएशन शुरू हो जाती है. एंड द एंडिंग देयर इज अ वेरी गुड टेक एंड अ ग्रेट मैसेज which the film has, a very progressive message. I think the end will be not जो usually end होता है ना हिंदी फिल्मों में infidelity को लेके, it won't be that. It will be something little surprising and progressive, which I think audiences in Calcutta will enjoy, in Bengal they'll enjoy that. इस फिल्म में दो जनरेशन को उठाया गया है. एक तो नीतू जी और अनिल जी की स्टोरी चल रही है, पैरेलली आप दोनों की चल रही है. तो ऐसा क्या आपको लगता है कि मतलब प्यार कहीं कम हो रहा है, मतलब रिलेशनशिप में लोग ज़्यादा विश्वास नहीं रख रहे हैं या ऐसा कुछ? देखिए आई फील कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विद द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड विद द एज ऑफ एज वी गो इनटू द फ्यूचर थोड़ा सा मैसेज आता है लोगों को टू बी इंडिविजुअलिस्टिक. वो हो जाता है 100% एंड पीपल गो थ्रू फेजेस. बट ह्यूमन बीइंग जो है वो सोशल एनिमल्स हैं, तो उन्हें हमेशा ग्रुप्स में रहने के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है. जैसे आप लोग भी ग्रुप में आए, हम लोग भी ग्रुप में आए. जो कोई भी व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता है, एक टीम की ज़रूरत होती है. सो आई डोंट फील कि ये कम होगा कभी. प्यार कभी कम हो ही नहीं सकता है इंसानों के बीच. ह्यूमैनिटी विल ऑलवेज एग्जिस्ट एंड लव विल ऑलवेज एग्जिस्ट. And what is life without love? Okay, we move on to the next question. हाय दिस इज देवरती फ्रॉम वी स्पॉट यू. आप लोगों से मेरा एक सवाल है, नीतू मैम और अनिल सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का? हम लोग बहुत खुशकिस्मत है कि हमें ये मौका मिला उनके साथ इस फिल्म में काम करने का. ऑल्सो नीतू मैम को वापस शी इज़ कमिंग बैक डूइंग अ फुल फ्लेज्ड मूवी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम. एंड अनिल सर इज द यंगेस्ट सुपरस्टार ऑन आवर सेट. ही इज अ लेजेंड, बट हिज एनर्जी, हिज यूथफुलनेस that he's not left is something which was very inspiring. और I think we just got along like a family. जैसे ही हम चंडीगढ़ पहुँचे जहाँ पे we started the film shoot, we got along. It was ऐसा कभी नहीं लगा that we were there was a seniority or there was never any hierarchy, because sir always he would make us come to his room to eat. He would call all of us. It was his birthday. We celebrated Diwali. We celebrated Christmas on set. So I felt he always kept everybody together, the entire unit, not just the cast but even the crew, all our teams. He made उन्होंने मतलब एक family. जो भी सेलिब्रेशन था वहाँ पे कियारा 10 बजे सो गई थी. She is a very old soul. I want you to know, and Anil is a very young soul. The truth is, by 9:30, 10, उनका she starts yawning and she's like, I will party, but हो जाता है, बत्ती बंद हो जाती है. Arun, this side. हाँ जी. Hi, what's up, Bollywood? Hi. I have a question to you. It's like कि शूटिंग में हमेशा यही देखा जाता है कि लड़कियां बहुत लेट सेट पे पहुंचती हैं. तो यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सबसे लेट पे पहुंचा है? मैं सेट पे लेट नहीं पहुंचता था, मैं वैन में लेट पहुंचता था. क्योंकि मुझे पता है कि जब बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, मुझे पता है कि ये लोग इसका इतना टाइम, इसका इतना टाइम, इसका इतना टाइम. सो एंड आई टेक लिटरली 5 to 10 minutes to get ready, literally. And I can change even while walking. I'm known for that. So we've all witnessed that on set. So I reach fast, but Neetu ma'am ने हम सबको surprise कर दिया because she would be the earliest on set. Okay. Earliest. She would be Most before punctual. 10. Before 10. And I don't think there's been any instance when Anil sir has been late. Never. यार मुझे आपसे एक सवाल है. अनिल सर है और वरुण भी है और मनीष भी है. इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा फिजिकली फिट है? आप बताओ. जब हम शूट कर रहे थे, every morning before shoot, we would wake up, get ready for shoot. Anil sir would wake up 1 hour earlier and start running, jogging. He never missed a workout. और एक नहीं, 2 बार. He would work out before shoot and after shoot.
Varun, तो obviously he's he's a gym junkie, but Anil sir's dedication and his just the way his lifestyle is so clean and so fit that I have to say at his age to have this energy. अभी recently हम मतलब कल ही दिल्ली में थे और अगर आपने देखा होगा there are videos of us dancing on stage. हम एक mall activity कर रहे थे और अनिल sir he was dancing on नीतू मैम song एक में और एक तू, and if you see the way he is jumping and jogging, मतलब we were panting, मतलब we were turning around and सांस ले रहे थे before the next song. Sir was going on, and at his age to do that, it's commendable. मतलब I hope we reach that. Social media पे he just posted some pictures of World Yoga Day and I even commented that are you an alien sir? Because मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है जो बेंजामिन बटन का जो चल रहा है उनके साथ. It's unbelievable. बहुत सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड ये मुझे एक्चुअली हम लोग बहुत सारे सिटीज़ में गए इंडिया में, ये सब मुझसे पूछ रहे हैं आप एक्साइटेड हो, आर यू प्रेशराइज्ड, बट आई वांट टू से कि वी ऑल बीन थ्रू अ पैंडेमिक और हम सब ने किसी ना किसी को खोया है इसमें एंड जिंदगी बदल गई, बट आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें ये मौका मिल रहा है कि हम लोग वापस ये कर पा रहे हैं, आपस में मिल पा रहे हैं, आप लोग सब आपस में बैठ पा रहे हैं, हम लोग जाके पेस्ट्री या कुछ खा पा रहे हैं. हमें ये पता नहीं था कि ये टाइम वापस आएगा या नहीं. एज ह्यूमन बींग्स फॉरगेट हम लोग एक्टर है वो सब छोड़ दो, आप काम करते हो वो सब छोड़ दो, बट जस्ट इंसानों की तरह हमें ये वापस भगवान ने, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने ये मौका दिया है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी रीस्टार्ट करें एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू दैट एंड आई वांट टू रीस्टार्ट इट ऑन अ वेरी डिफरेंट नोट एंड मुझे वो वापस की फिजूल की टेंशन एंड प्रेशर वो नहीं लेना है. I love the audience and I believe they'll give me love back. Hi. एक सीन है जहाँ मैं बोलना नहीं चाहता कुछ स्टोरी के बारे में, बट एक व्यक्ति के साथ I mean it recently happened to me where you know it always happens जब आप एक certain age के हो जाते हैं और आपके माता पिता की तबीयत ठीक नहीं होती है तो वो बहुत फिक्र हो जाती है आपको, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू सी द मोस्ट पावरफुल फिगर इन योर लाइफ वीक, आप वो देख नहीं पाते हो, तो दैट मैं वो हैंडल नहीं कर पाता हूँ असल ज़िंदगी में भी एंड पिक्चर में भी एक ऐसा सिचुएशन है वो आप देखिए जो भी है, बट है इमोशनल एक बच्चे के लिए वही सबसे बड़ी आई थिंक स्ट्रेस होती है. Yeah, man. Hi, how are you? I'm fine. How so about many you? years. Yeah, Okay. 3-4 years. Thanks for recognizing me. This is Sharmila. My question to you, Varun, that you are happily married, and after Jug Jug Jio, what you said to our reporter that your married life is going fantastic. So, what will be your advice to Kiara? Give us 5 tips so that Kiara can make a very good married life. He's already given me 2-3 tips. Okay, rest of 2 tips. I'll share some of the tips he's given. He said, make sure whoever you marry, you have a good friendship with. Friendship is very important in a marriage. Then what was the other one you said? I said most important thing is compatibility. तो हम लोग हमेशा अच्छी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि मैं ये वैसी है, बट जो भी फ्लॉज हैं यू हैव टू एक्सेप्ट दैट बिफोर हैंड, क्योंकि फ्लॉज सब में है एंड इफ़ यू डोंट लाइक कोई बुरी आदत होती है किसी इंसान में यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, और कभी कभी क्या हो जाता है वो बुरी आदत भी ओवर टाइम आपको अच्छी लगने लगती है, सो यू हैव टू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट. TED Talks with Bharat. थर्ड मैं बोलूँगा डोंट एवर लूज द इमोशनल कनेक्ट. वी कीप टॉकिंग अबाउट फिजिकल इन्फिडेलिटी, बट इमोशनल इन्फिडेलिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है मेरे हिसाब से. दैट इमोशनल कनेक्ट जो आपके और आपके पार्टनर के साथ होता है वो कभी आपको लूज़ नहीं करना चाहिए, वो हमेशा आपको रखना चाहिए आपके पार्टनर के साथ. एंड चौथी, आपको कई चीज़ें जो आपके पार्टनर करना चाहते हैं वो भी करो. जैसे अगर उनको म्यूजियम जाना है और आप म्यूजियम जाने वाले नहीं हो तो म्यूजियम भी जाओ. मैं गया था और खुश रहो वहाँ पे, फोन पे मत रहना वरना डांट पड़ेगी. और आई लव यू बोलो रोज. I think this is super. This is super. Hello, this is Shantan from Field Gossip. What's up? Hi, how are you, buddy? From where?
I am from Field Gossip. Field gossip. We all know that Varun is a very funny person. So can you share some off-screen memories or off-screen moment with us? तो अभी कुछ ही दिन पहले हम पुणे गए टू प्रमोट द फिल्म और वेरी काइंडली द मॉल हैड सेंट अस अ 4-seater चार्टर. तो बहुत छोटी सी, इट वाज लाइक जैसे गाड़ी है विथ विंग्स, इट वाज दैट काइंड ऑफ अ फ्लाइट. सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक वी वर सिटिंग इन द कॉकपिट. यू कुड सी द पायलट, को पायलट, हम बैठे थे और हम रनवे पे थे. They were about to take off. Co-pilot and pilot are doing, you know, they're getting everything in order. और वरुण बैठा है यहाँ पे और पूछा है, सर फाइटर जेट्स इस वेदर में फ्लाई कर सकते हैं ना? तो co-pilot is thinking मैं should I start flying or should I answer his question? He's like, sir, not in this weather. नहीं, but अगर if there's a war, then what happens? So we're looking at Varun, shut up, let him start flying. So that's Varun. He's always up to something. He doesn't think about कहाँ है, no filter. जो दिल में है वो बोल देता है, पूछ लेता है. But luckily we took off and we reached safely. And we have to thank that pilot, co-pilot, because Varun asked them so many questions. But after a while he did get back in his seatbelt and sat like a good passenger. Last 2 questions. Hi Kiara, this side Kiara. This side is which side? This side. Okay, hi. Hi Kiara, I'm Shobik from India Blooms. Kiara, you are having a success run in the box office from Shershah to Bulbulaiya and now of course Jug Jug Jio. Now is the success making you choosy about roles or you just want to go with the flow? Well, I went with the flow when I signed these films. So God has been very kind. The audience has given a lot of love, and I just want to keep that same, you know, purity when I sit for a narration and I say yes to a script. I want to have that same purity with whatever films I choose. I feel, for me personally, I've always looked at films as an audience when I'm hearing it. I always feel if I want to watch this film, then I want to be a part of it. So I hope that, you know, there comes a day where the audience says, okay, if Kiara's chosen this film, then we want to be a part of it. I mean, we want to come in and watch it. And that's what happened when, you know, with Shershah or with Bhool Bhulaiya now. The kind of love we've gotten has been so unanimous, and I'm really hoping for the same with Jug Jug Jio. But I hope the audience keeps telling me also Jug Jug Jio, and that's all that will make me happy. And Varun, you were talking about that you wanted to start differently after the pandemic, and we have seen you in different, sort of different characters in October and a kind of Sui Dhaga as well. So do you want to explore that region? You're the 6th person already in Kolkata who's spoken to me about October. Okay. So I'm just very grateful for the love. I want to say that because I know this is Sujita's town, and I appreciate the fact that people love that film because it's very close to my heart. So I've always tried to mix it up at least from the beginning of my career because I am that kind of a person. I just love cinema and I love all kinds of films, you know, whatever genre they are. And I can't ask for a better film than Jug Jug Jio because it's a film about love, about relationships. And I always believe that actors in India get love when they connect with the audience, when they are in the audience's heart, like Mr. Shah Rukh Khan, you know. He's not had a release for so many years, but he's still in people's hearts. So whenever his film is going to come, it's going to connect because people love him. So that's what I feel. I don't want to kind of show that I'm this big star and I can do this and I have this and that. I just feel I want to make a good film and not waste people's time. Because we can come and promote this film and say everything. Ultimately, the film has to be good. And all we want is on this Friday that people from Kolkata give it a chance. You know, just want people from Bengal to give Jug Jug Jio a chance, and then it's the film which has to take over. That's all. Thank you so much. This was the conversation. We can do one or two more questions. Hi, Varun. This is Madhu from Prabhat Khabar newspaper. I have only one question. My question to you is that on 24th June, Pankaj Tripathi sir Sherdil is also releasing, and when we talk about him, he is always about realistic acting. So are you nervous? He's I think Pankaj sir is an inspiration to all of us. What a brilliant actor, and you know, and best of luck to Pankaj sir for Sherdil. It's a very noble film from what I've heard,
and looking forward to that. Also doing very well, finding its audience, and all kinds of films should be encouraged and loved, and yeah, that's Anything you all. want to say to the audience? Why Jug Jug Jio? Please watch Jug Jug Jio. It's a film which has a lot of entertainment, a lot of comedy, emotions. There are things in this film which I don't want to reveal, but it's worth your while, definitely. I'm not just saying this because I'm promoting the film. We all truly believe it's a good film and it will be worth your money.